From the BJP's sharp criticism of Rahul Gandhi's remarks to updates over Delhi politics and Meta's apology over Mark Zuckerberg's controversial comment. Here are the major stories of today in this news wrap. Hi, I'm Flora Swai and you're watching the Indian Express. Let's get started. Leader of opposition Rahul Gandhi stirred a major controversy with his statement saying we are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. The remarks made on Wednesday ignited a political storm with the BJP accusing the Congress of revealing its true colors and exposing its ugly truth. The statement has drawn sharp reactions from across the political spectrum, further intensifying the ongoing political discourse. Here are the full details on this. We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. It is not a secret that Mr. Gandhi and his ecosystem have close links with urban naxals and the deep state who want to defame, demean and discredit India. Congress leader Rahul Gandhi is under attack by the ruling Bharatiya Janata Party leaders for his controversial comments at the inauguration ceremony of Congress's new headquarters on Wednesday. Rahul pointed out that the vision of the Congress and RSS are in conflict and said, "We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself." That do not think that we are fighting a fair fight. There is no fairness in this. If you believe that we are fighting a political organization called the BJP, that we are fighting a political organization called the RSS, you have not understood what is going on. The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. Shortly after his speech, BJP National President JP Nadda wrote on X, "Hidden no more. Congress's ugly truth now stands exposed by their own leader. I compliment Mr. Rahul Gandhi for saying clearly what the nation knows, that he is fighting the Indian state. It is not a secret that Mr. Gandhi and his ecosystem have close links with urban naxals and the deep state who want to defame, demean and discredit India. His repeated actions have also strengthened his belief. Everything he has done or said has been in the direction of breaking India and dividing our society." Nation that is aggrieved, that is hurt, that feels let down by an irresponsible leader of opposition in Rahul Gandhi. And I can very responsibly say, India, Bharat deserves a more responsible, a more faithful leader of opposition. And truly, it is our misfortune that we have a part-time and irresponsible, immature leader of opposition in Rahul Gandhi, who also happens to be guided by forces like George Soros, forces that are inimical to the integrity of our country. And it would not be wrong to just point out that Rahul Gandhi's words, actions and his belief itself hurts the sovereignty and the integrity of our country. And now turning to Delhi politics, the race intensifies as prominent leaders including Aam Aadmi Party chief Arvind Kejriwal gear up to file their nominations for the upcoming Delhi Assembly elections. Among the notable figures are BJP leaders Ramesh Bidhuri and Parvesh Verma, who join over 50 candidates set to submit their papers today for the 5th of February polls. The deadline for filing nominations is on the 17th of January, with the process having officially commenced on the 10th of this month. मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहूँगा कि काम के लिए वोट दीजिएगा। एक तरफ काम करने वाली पार्टी है और एक तरफ गाली गलौज देने वाली पार्टी है। गालियाँ देने से कोई फायदा नहीं होता है, गालियाँ देने से कोई तरक्की नहीं होती, विकास नहीं होता। हम इस बात पे चुनाव लड़ रहे हैं कि हमने पिछले 10 साल में क्या काम किया,
आगे 5 साल में क्या काम करेंगे, हमारा दिल्ली का विजन क्या है, हम इन चीज़ों पे चुनाव लड़ रहे हैं। और वो दूसरी बीजेपी जो है वो इस बात पे केवल सुबह से शाम तक हमें गालियां देती है। तो काम के लिए वोट दीजिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, इन चीज़ों के लिए वोट दीजिए। कई सारे काम किए हैं, अभी कई सारे काम बाकी हैं, करने भी हैं। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि लोग जम के काम के लिए वोट देंगे। बीजेपी की तरफ से अभी भी कोई सीएम अनाउंसमेंट नहीं है, आप लोग लगातार उनके पास ना सीएम है, ना विजन है, ना नैरेटिव है। दिल्ली वालों के लिए क्या काम किए उन्होंने 10 साल में, उनके पास कोई जवाब नहीं है इसका। अगले 5 साल वो क्या काम करेंगे, इस बात का भी कोई जवाब नहीं है। Moving ahead to a controversy involving Meta, days after Mark Zuckerberg remarked on a podcast that several governments, including India, lost power in elections post-COVID-19 pandemic, the company issued an apology terming the statement an inadvertent error. Shivnath Thukral, Meta India's Vice President of Public Policy, took to social media platform X to clarify the company's position and address the fallout of the remarks. For more details, check out our report. Meta India issued a formal apology on Wednesday after CEO Mark Zuckerberg's comments regarding the 2024 Indian elections sparked a controversy. Zuckerberg, in a recent podcast appearance, had claimed that many incumbent governments lost power in the 2024 elections, including India's. The remarks were immediately called out by Union Minister Ashwini Vaishnaw, who deemed them factually incorrect. Meta later clarified that it was an inadvertent error and apologized for the confusion. In a statement posted on social media platform X, Meta India's Vice President Shivnath Thukral directly addressed Union Minister Ashwini Vaishnaw's concerns. He clarified that while Zuckerberg's observation about incumbent parties losing re-election post-COVID was accurate for several countries, it did not apply to India. Thukral further expressed that India remains a crucial market for Meta, calling it an incredibly important country for the company's future. The apology came after Vaishnaw took to X to publicly refute Zuckerberg's comments. On 13th of January, Vaishnaw pointed out that India, as the world's largest democracy, had held the 2024 elections with over 640 million voters. He emphasized that the people of India reaffirmed their trust in Prime Minister Narendra Modi's leadership and the NDA-led government, which secured a third-term victory. Furthermore, BJP MP Nishikant Dubey, who chairs the Parliamentary Standing Committee on Communications and Information Technology, also responded to Zuckerberg's comments. This is what he said. मेटा के जो मालिक हैं जुकरबर्ग, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने दिखाया है कि कोविड-19 के बाद दुनिया में सरकार के खिलाफ जो है एक माहौल बना है और उसमें उन्होंने भारत का भी जिक्र किया है। अब भारत एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, 140 करोड़ लोगों का देश है। आज़ादी के बाद दूसरी ऐसी सरकार है जिसको कि जनता ने तीसरी बार चुनकर भेजा है। हम पिछली बार 303 थे, आज भी लगभग 298 299 के आसपास हैं, मान के चलिए कि 300 ही है एनडीए। तो ये जो बयान है जुकरबर्ग का, ये अपने आप में अलार्मिंग है, क्योंकि पूरी दुनिया में ये माहौल चल रहा है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, एक तो महिलाओं के बारे में उनका दुराग्रह है, महिलाओं के बारे में उल्टी पुल्टी बातें होती है, बच्चों के बारे में उल्टी पुल्टी बातें होती हैं। ऑस्ट्रेलिया ने देखा आपने कि 18 साल से कम बच्चों को जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाना मना कर दिया है। दूसरा वो पॉलिटी जो है, जो पॉलिटिक्स है, जो सोशल लाइफ है, वो प्रभावित करता है। ये पूरे दुनिया में इस तरह की बातें चल रही है, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद ये चीज़ें और भी प्रभावी हो गई हैं। उसमें इस तरह का बयान ये दिखाता है कि वो भारत के लोकतंत्र पे वो इंटरफेयर कर रहा है और पूरी दुनिया को वो गलत जानकारी देके गुमराह कर रहे हैं कि हम जो है भारतीय जनता पार्टी या एनडीए लूज किए। तो इस कारण से 140 करोड़ लोगों का रिप्रेजेंट करती है भारतीय संसद। 140 करोड़ लोगों ने
माननीय मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाया है, या कोई भी प्रधानमंत्री होता तो उसका जो रिजल्ट का जो परिप्रेक्ष्य है वो सही दृष्टि से उसने नहीं बताया। इस कारण से हमने तय किया है कि हम मेटा के लोगों को बुलाएंगे, उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, और नहीं तो उनके ऊपर जो भी कानून सम्मत कार्रवाई होगी वो हमारी कमेटी रिकमेंड करेगी। सर, कब तक का टाइम दिया गया है इसमें उनको जवाब देने के लिए? हमारी कमेटी कल से अंडमान निकोबार के दौरे पर है। हमारी कमेटी 20 तारीख को अपने दौरे को ख़त्म करेगी, और मुझे लगता है कि वहीं हम कमेटी के सदस्यों से बात करेंगे, तो 20 से 24 के बीच में किसी एक दिन उनको हम बुलाएंगे। The controversy surrounding Zuckerberg's remarks also prompted criticism over Meta's content moderation practices. Trinamool Congress's Rajya Sabha MP Saket Gokhale raised concerns about the company's recent decisions to end its fact-checking program and revise its community guidelines on hate speech and disinformation. In a letter to Nishikant Dubey, Gokhale highlighted that Meta platforms, including Facebook and Instagram, have been misused for spreading hate speech in India, with insufficient action taken to remove harmful content. He also pointed to criticism over the role of Meta's platforms in spreading disinformation and fake news, urging the parliamentary committee to... Moving on to a significant development in India's defense sector, Prime Minister Narendra Modi on Wednesday dedicated 3 state-of-the-art naval frontline combatants, INS Surat, INS Nilgiri and INS Vaghshir, to the nation. The commissioning ceremony took place at the naval dockyard in Mumbai, marking a historic milestone for the Indian Navy. Highlighting the occasion, PM Modi emphasized the significance of this day for India's maritime heritage and the Navy's illustrious history. He linked the event to the spirit of the Atmanirbhar Bharat Abhiyan, which is India's push for self-reliance, and paid tribute to Chhatrapati Shivaji Maharaj's legacy. साथियों, 21वीं सदी के भारत का सैन्य सामर्थ्य भी अधिक सक्षम हो, आधुनिक हो, ये देश की प्राथमिकताओं में से एक है। जल हो, थल हो, नभ हो, डीप सी हो या फिर असीम अंतरिक्ष, हर जगह भारत अपने हितों को सुरक्षित कर रहा है। इसके लिए निरंतर रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का गठन ऐसा ही एक रिफॉर्म है। हमारी सेनाएं और अधिक एफिशिएंट हो, इसके लिए थिएटर कमांड की दिशा में भी भारत आगे बढ़ रहा है। साथियों, पिछले 10 साल में जिस तरह भारत की तीनों सेनाओं ने आत्मनिर्भरता के मंत्र को अपनाया है, वो बहुत ही सराहनीय है। संकट के समय दूसरे देशों पर भारत की निर्भरता कम से कम हो, इस गंभीरता को समझते हुए आप सभी इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं, नेतृत्व दे रहे हैं। हमारी सेनाओं ने 5000 से ज्यादा ऐसे साजो सामान और उपकरणों की लिस्ट तैयार की है जो अब वो विदेशों से नहीं मंगाएगी। जब भारत का सैनिक भारत में बने साजो सामान के साथ आगे बढ़ता है तो उसका आत्मविश्वास भी कुछ अलग ही होता है। पिछले 10 साल में कर्नाटका में देश की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर बनाने वाली फैक्ट्री शुरू हुई है। सेनाओं के लिए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाने वाली फैक्ट्री शुरू हुई है। तेजस फाइटर प्लेन के भारत की साख को आसमान की नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। यूपी और तमिलनाडु में बन रहे डिफेंस कॉरिडोर्स डिफेंस प्रोडक्शन को और गति देने वाले हैं। और मुझे खुशी है कि हमारी नेवी ने भी मेक इन इंडिया अभियान का बहुत अधिक विस्तार किया है।
That's a wrap for today, but here's something fascinating to leave you with. Captivating visuals of the Indian Army's robotic dogs performing a synchronized parade during the Army Day celebrations in Pune.